Good morning, all of you. Today's topic is fertilization and implantation. Now, during copulation, semen is released by the penis into the vagina. Okay, इस process को insemination की process बोलते हैं. The motile sperm swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus, and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. ओके फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो कॉल्ड ओव्यूलेशन. नाउ एंड दिस ओवा ट्रांसपोर्ट टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. Okay, you know that the fallopian tube divided into three regions: isthmus, ampulla, and infundibulum. So, ampullary region where the fertilization takes place, that is the middle part of the fallopian tube. Now, ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy. ओके सो ये ज़रूरी नहीं है कि हर ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी. अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अनफर्टिलाइज एग मेंस्ट्रुएशन के थ्रू रिलीज हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स in contact with zona pellucida layer, that is the outermost layer of the ovum, and induce changes in the membrane that block the entry of additional sperm. Okay, यहाँ पर वन स्पर्म ही केवल जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करेगा और अदर स्पर्म जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे. Thus it ensure that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum. Okay, acrosome, it means anterior part of the sperm which contain hydrolytic enzymes. So with the help of hydrolytic enzymes, the outer layer of the ovum dissolved. Okay, so this induce the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also unequal as result in the formation of secondary polar body. Okay, now and the haploid ovum, that in other word we can say that ootids. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together and form diploid zygote. आप सभी जानते हैं कि दोनों ही गैमेट्स ओवम और स्पर्म हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं और आफ्टर फ्यूजन वो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, सो द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज अ जाइगोट, मूव्स थ्रू द isthmus of the oviduct. Isthmus is the third part of the oviduct. ओके, जहाँ पर जो जाइगोट है वो मूव कर जाएगा और धीरे धीरे क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. क्लीवेज इट मीन्स एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पर सेल्स जो हैं वो ब्लास्टोमर्स का फॉर्मेशन करेंगी. ओके, सो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट moves through the isthmus of the oviduct, that cleavage towards the uterus, and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells. These daughter cells are called blastomas, जो कि आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रही हैं. The embryo with 8 and 16 blastomas is called morula. That is the first stage of embryogenesis, that is called morula. The morula continue to divide and transform into the blastocyst. Blastocyst, it means cavity-like structure as it moves further into the uterus. The blastomas in the blastocyst are arranged in an outer layer called trophoblast and inner group of the cell attached to the trophoblast called inner cell mass. The trophoblast layer
then gets attached to the endometrium. एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, तो उससे कौन अटैच्ड हो जाएगी? ट्रोफोप्लास्ट लेयर, एंड द इनर मास सेल गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो. और सेकेंड पार्ट कौन सा था? इनर सेल मास का, जो कि एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाएगा. आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कन्वर्स the blastocyst. As a result, blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. So this process is called implantation, which takes place in the uterus. Okay, यहाँ पर implantation की process complete हुई है, जहाँ पर जो यूट्रस है उसकी एंडोमेट्रियम वॉल में जो जाइगोट है वो पूरी तरह से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर फिक्स हो जाता है. ओके, आई होप you all understand this topic. If you have any doubt then please session classes में आप अपने doubts लेकर आएँ. Thank you.